Okay, Assalamu alaikum to everyone. So, कौन सा टॉपिक हमें सॉल्व करे सो लास्ट क्लास था? Which topic we discussed? Okay. Yes, stop talking. Okay, so we have dimensions today. Okay. So in dimensions, you know what is the meaning of dimensions, right? MLT form में जो लिखती और most of the questions we have solved in dimensions also. Which of the following is a dimensional constant? होगा ये सॉल्व कर डाले ये. तो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करे थे लास्ट क्लास में? You tell me any. Okay, okay. ठीक है. So which of the following is dimensional constant? So today's question, which of the following is a so they have given four options. In these four options, so which is dimensional constant? The first one is refractive index, refractive index. Option B is dielectric constant. Okay. C is relative density. Yes, ma'am. It is not audible. कौन सा बोलो? नहीं आ रहा है, ऑन नहीं, बोर्ड नहीं दिख रहा है. Okay, find out the answer. Which one is the correct one? Which of the following is dimensional constant? तो इसमें कौन सा dimensional constant है? Refractive index, dielectric constant, relative density, gravitational constant. तो कौन सा इसमें अब चार ऑप्शंस में कौन सा कांस्टेंट है स्टडी कर को ही? यस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. ओके, डायमेंशनल कांस्टेंट देखो इसके सारे का डायमेंशन नहीं रहता. इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द डायमेंशनलेस यूनिट नहीं बनता है. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या बनती है? के विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द वैल्यू, जैसे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द नंबर, जैसे कि 1 2, तो ये भी वैल्यू हो जाता है, इसका भी यूनिट नहीं बनता है. नेक्स्ट रिलेटिव डेंसिटी. ओके, तो इसका भी कुछ कांस्टेंट नहीं बनता. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? सो फोर्स विच इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय डी स्क्वायर. करेक्ट. तो ये कौन सा फार्मूला है? ओके, इट्स आर स्क्वायर डी स्क्वायर, कुछ भी लिख सकती, नो प्रॉब्लम. क्या भी आर स्क्वायर लिखना, अगर वो क्या भी नहीं है. ओके, यू कैन टेक डी स्क्वायर
ओके तो इसे डी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट एनीथिंग। व्हाट इज दिस फार्मूला कॉल्ड? कौन सा फार्मूला है ये? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड व्हाट इज जी स्टैंड्स फॉर? यस, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला बनता है एफ डी स्क्वायर अपॉन, ओके, एम एंड एम। बनता नहीं बनता इसका डायमेंशनल फार्मूला? तो दैट इज द क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से तो ये बनता डायमेंशनल कांस्टेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, the ratio of dimensional formula for, take down the ratio of dimensions of Planck's constant, the ratio of dimensions of Planck's constant and the moment of inertia, and the moment of inertia has the dimension of the ratio of dimensions of Planck's constant, जैसे कि h is the Planck's constant, okay, and moment of inertia, तो इस दोनों का what is moment of inertia? I, correct? So I is the moment of inertia। इस दोनों का रेशियो का डायमेंशन क्या अगर को पूछते हैं, समझ में आ रहा है? the ratio of moment, h is the Planck's constant, okay, Planck's constant I कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस दोनों का रेशियो का डायमेंशन पूछ रही, ओके। सो ऑप्शन ए इज, तो ये किसके बराबर हो सकता है? फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी टाइम, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी टाइम, ऑप्शन डी इज एंगुलर मोमेंटम। Okay, the dimension of Planck's constant, the ratio of dimension of Planck's constant and moment of inertia is the dimension of, तो इसमें चारों में से तो इस दोनों को रेशियो निकालो तो किसका डायमेंशन के बराबर हो सकता है? Got it my point? Okay, so what is h is the Planck's constant, तो इसका फार्मूला क्या बनता है? E equal to h into nu, so E is for energy, okay, energy of photon, ये फार्मूला बनता है energy of photon, all right, here energy of photon। So this you study in second year chapter, atoms chapter, you'll study dual nature and radiation। तो chapter number okay 11 you study, chapter number 11 में second पीयूसी में study करते हैं about energy of photon, dual nature and radiation of matter बोल कर होता है, उस chapter में you'll study about what is energy, मतलब ये equation हम पर study करते हैं तुम्हें, okay। Right now you remember E equal to h nu, so this nu is the frequency of the photon, h is the Planck's constant, E is the energy। अब इसमें से h काटना, so h which is equal to E by nu हो सकता है। what is E stand for? yes, anybody have doubt? समझ में आया फार्मूला? ये देखो, ये बेसिक फार्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन का। अब इसमें से h निकालना हमें, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ h, तो उसके बाद I का डायमेंशन निकाल को रेशियो निकाले तो ये चारों में से कौन सा तो एक सही ऑप्शन मिलता है। सो व्हाट इज E? E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, energy which is equal to work done, okay। frequency, what is frequency? frequency is reciprocal of time period, तो frequency का फार्मूला क्या था? frequency is reciprocal of time period, so it is a very fundamental and very basic formula, okay। अब यहाँ पर h which is equal to what is work done? correct, force into displacement, ये t को ऊपर ले गए तो t पावर -1 हो जाता है, ये 1 by t reciprocal, t पावर -1, okay। so h which is equal to what is force? mass into acceleration, okay। so mass का डायमेंशन 1, acceleration का डायमेंशन क्या होता है? मीटर सेकेंड पावर -2। देखो यहाँ पर जो फोर्स है, नहीं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, तो फोर्स का डायमेंशन क्या बनता है? मास की पावर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का डायमेंशन 1, टाइम का डायमेंशन 2, और यहाँ पर और एक एक्स है, ओके। L1 ऑलरेडी 1 है, 1 + 1 becomes 2, सो डिवाइड बाई t -1, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर -2 कैंसिल होकर -1 बचता है, ओके। सो व्हाट इज h डायमेंशन? h का डायमेंशन क्या बन रहा है? मास 1, ओके, लेंथ 2,
t power minus 1, correct? So this is the dimension of Planck's constant. समझ में आ रहा है? So it is the dimension of which one? Planck's constant, h का dimension. Similarly, we have to find the dimension of moment of inertia. So what is the formula for moment of inertia? System of particles rotational motion में study करके होती है तुम्हें. Moment of inertia, radius of gyration, right? Okay, the last topic study करके होती है. What is moment of inertia? Moment of inertia is the product of mass of the particle and distance from the axis of rotation to the point. Okay, तो यहाँ पर m कहते हैं इसके मास ऑफ द पार्टिकल, r इज द डिस्टेंस. जैसे कि एक बॉडी रहता है, ओके, तो यहाँ से लेकर सपोज इफ आई टेक दिस पार्टिकल m एंड दिस डिस्टेंस इज r, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेना. ओके, सो हाउ टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I which is equal to mass and what is r stands for? Okay, length. So this becomes length square. Okay, we got this two formula. अब रेशियो पूछ रही हूँ, रेशियो का मतलब क्या? Divide h by okay I. So h by I, what is h? So m power 1 L square t power minus 1 upon m power 1 और L square, correct? अब यहाँ पर देखो L square will get cancel, m power 1 and m power 1 will get cancel. What is h by I ratio? क्या मिल रहा है? t power minus 1, t power minus 1. What is t power minus 1 stands for? Very good. क्या मैम? ब्लू कलर ब्लिंक हो रहा है, ब्लू कलर लाइट. क्या ऑटोमेटिक ऑफ हो जा रहा है क्या वो? So option correct one, first one is frequency. Okay. Okay, take down next question. If x times momentum is work, if okay, if x time momentum is work, if x time का तो क्या multiply times, if x times momentum is work, then the dimension form of x is okay. If x times momentum is work, if x time momentum is work, we'll go to the next page. ठीक है, anybody writing? Number देखो third question. Okay, what is the symbol of momentum? Okay, momentum क्या बनता है? Momentum is the product of mass and velocity, right? Okay, कुछ भी बॉडी मोमेंटम है उसका क्या रहता है? प्रोडक्ट मास एंड वेलोसिटी रहता है. ओके, यहाँ पर देखो x टाइम्स मोमेंटम x इंटू पी, x टाइम मोमेंटम किसके बराबर है? इज इक्वल टू वर्क. समझ में आ रहा है? x टाइम्स मोमेंटम इज वर्क, देन द डायमेंशन फॉर्म ऑफ x इज, तो x का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनता है? तो x का करेक्ट. सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन बोलो, यू हैव टू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर. Okay, L power 1 t power minus 1. Solve this and you have to tell me the answer. L power minus 1 t power 1. Option B is LT power minus 1. Option C is yes ML. ओके, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? विच वन? yes, B is the correct option. समझ में आया? ओके, गॉट इट. सो वर्क डन और मोमेंटम, वर्क डन का फार्मूला क्या बनता है? व्हाट इज द वर्क डन फार्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू वेलोसिटी. फोर्स को मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू वेलोसिटी, मास मास कैंसिल करो. ओके, एक्सीलरेशन का क्या बनता है? लेंथ पावर 1 t पावर माइनस 2.
है, x इज द लेंथ, ऑलरेडी 1 है, t पर -2, वेलोसिटी क्या हो जाता है मीटर पर सेकेंड, सो मीटर बिकम एज लेंथ, सेकेंड बिकम एज t पावर -1, तो यहाँ पर -1 -2 कैंसिल होता है, ओके यहाँ पर लेंथ विल गेट कैंसिल, सो लेंथ पावर 1 t पावर -1 इज द आंसर, ओके बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, dimension form of our impulse is, dimensional form of our impulse is, dimension form of our impulse is, so what is the form of our impulse, j equal to f into dt. So what is impulse? It is a force which acts on the body at a small interval of time, correct? समझ में आ रहा है? अब जैसे कि एग्जांपल व्हेन वी किक ए बॉल, जब हम बॉल किक करते हैं ओनली द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड विल किक ए बॉल, इट इज नॉट कंटिन्यूसली वी आर अप्लाइंग द फोर्स। अगर एक बार है हमें बॉल को हमें थ्रो करती, वो बॉल क्या होता है जाको इसे दीवार के ऊपर लग को वापस आ जाता है, मतलब जो वो बॉल जब इस दीवार में लगने का जो टाइम रहता नहीं, दैट इज वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। The batsman hit a ball with the bat, very short interval of time. Okay, a football player kick a ball with a short interval of time. तो हम पर क्या लग रहा है फोर्स और टाइम बहुत शॉर्ट इंटरवल में लग रहा है। ओके ये प्रोडक्ट को हमें क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज इंपल्स। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट व्हाट इज द आंसर, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बनता है, अगेन फोर्स क्या हो जाता है, यस, सो मास पावर 1 एल स्क्वायर टी पावर -2, सॉरी ओके टाइम, सो टाइम बिकम एस +1, यहां पर -1 बन जाता है, सो व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला, m पावर 1 l पावर 1 t पावर -1, करेक्ट? हाउ मेनी ऑफ देम गॉट द आंसर? ओके नेक्स्ट, द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशंस, द फॉलोइंग पेयर डज नॉट हैव सेम डायमेंशंस, ओके मतलब सेम डायमेंशन कौन से नहीं है, ऑप्शन ए इस प्रेशर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक तो प्रेशर, ओके मॉडुलस ऑफ ऑप्शन बी इज angular velocity, velocity gradient, option C is surface tension force constant, okay impulse and torque, option E D, okay so D is the correct one, okay अब यहां पर देखो I'll explain other options also, so let me we have a clear concept because ऐसा क्वेश्चन दूसरे में पूछे तो अगर तुम इसमें आपको नॉट हैव सेम डायमेंशन, अब तुम कैसा पूछ सकती सारे सारे डिफरेंट डाल को एक कौन सा सही है करके पूछ सकती तुम ना, देखो क्वेश्चन कैसा भी ट्विस्ट करके पूछ सकती तुम ना, यहाँ नॉट करके बोल को डाल इफ दे हैव रिमूव्ड, अगर यहाँ पर ये नॉट रिमूव को डाल क्या हो जाता है, तो इसमें से कौन से सेम डायमेंशन ही करके बोल को कैलकुलेट करना, ये चार ऑप्शन में से तीन रॉन्ग देखो रहती एक सही रहती, ओके तो इसके लिए यू मस्ट नो द फॉर्मूला व्हाट इज प्रेशर, सो प्रेशर विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, करेक्ट, सो फोर्स अपॉन एरिया, अब यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर दो विल गेट द अदर आंसर, ओके मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एल स्क्वायर हो जाता है ये, ओके तो यहाँ पर अगेन इफ यू टेक elasticity, what is elasticity, Hooke's law, it is the ratio of
stress to the strain, correct? So stress upon, okay, stress upon strain. Okay, देखो strain को no unit, strain is the dimensionless unit because what is strain? It is the ratio of change in length to the original length. समझ में आ रहा है? चेंज इन लेंथ क्या होता है? dl ओरिजिनल लेंथ l, तो दोनों का सेम डायमेंशन कैंसिल हो जाता है. इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका यूनिट नहीं बनता. ओके, अब स्ट्रेस क्या बनता है? व्हाट इज स्ट्रेस? तो स्ट्रेस विच इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया. फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, देखो यहां पर भी फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, तो यहां पर भी सेम सेम बन रहा है, तो दे हैव द सेम डायमेंशन. ओके, लेट मी चेक द अदर वन. ओके, सो व्हाट इज द अदर सेकंड वन? एंगुलर वेलोसिटी और वेलोसिटी ग्रेडियंट. व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? ओके, सो v विच इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर. एक किसका रिलेशन, ये फार्मूला ये देखो. फर्स्ट पी में तुम्हें सारे फार्मूले, चैप्टर के सारे फार्मूले याद रखना. अगर याद रखिए अगर बोले तो दिस वेरी इजी क्वेश्चंस, मतलब डायमेंशनल, मतलब ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस आंदे यू कैन सॉल्व विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, बट यू मस्ट नो द फार्मूलास. ओके, तो यहां पर व्हाट इज v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, कौन सा फार्मूला ये? इट इज नॉट w, इट इज ओमेगा. ओके, सो v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, तो कौन सा फार्मूला ये? एनीबडी? वेयर वी विल यूज दिस फार्मूला? एग्जैक्टली, रोटेशनल मोशन में. व्हाट इज द टर्म वी कॉल दिस फार्मूला? जैसे कि फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन बोलते हैं, करेक्ट? और प्रेशर के लिए फोर्स अपॉन एरिया बोलती हैं. तो ये फार्मूला को हमें क्या बोलते हैं नाम? इट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. समझ, व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? कुछ भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन में जाता है उसकी वेलोसिटी बनती है, दैट इज कॉल्ड एज लीनियर वेलोसिटी. एंड व्हाट इज द ओमेगा टर्म इज रिलेटेड फॉर एंगुलर वेलोसिटी. सो द एंगुलर वेलोसिटी व्हेनेवर अ बॉडी इज रोटेट, इट हैज अ वेलोसिटी. जैसे कि अब एग्जांपल फैन रोटेट हो रहा है, इसका एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी बन सकता है. समझ में आ रहा है? ओके, अब यहां पर देखो, लाइक देयर आस्किंग एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा विच इज इक्वल टू v by r हो सकता है, v by r, करेक्ट? सो व्हाट इज ओमेगा विच इज इक्वल टू v, क्या हो जाता है? एंगुलर वेलोसिटी. सॉरी, व्हाट इज v इज द लीनियर वेलोसिटी. व्हाट इज लीनियर वेलोसिटी? यस, मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? सो मीटर पर सेकेंड होता है. सो लेंथ t पावर माइनस वन. ओके, यहां पर क्या हो जाता है? अपन लेंथ, करेक्ट? तो ये कैंसिल होगा, तो व्हाट इज डायमेंशन फार्मूला वी हैव? t पावर माइनस टू. ओके, आर यू रिमेंबर ओनली दिस फार्मूला? सिर्फ ये फार्मूला को याद रख लियो. ओके, नेक्स्ट वेलोसिटी ग्रेडियंट. व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट? देखो, वेर एवर द वर्ड ग्रेडियंट इज देयर, कहीं पर भी ग्रेड, जैसे कि प्रेशर ग्रेडियंट आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है, ओके, लाइक पोटेंशियल ग्रेडियंट आता है. सो वेर एवर द वर्ड ग्रेडियंट इज देयर, तो क्या करना, जो भी फार्मूला आता है उसे डिवाइड बाय एल कर लेना. कुछ भी फार्मूला आंदे